Good morning, students. Welcome to your physics class. Today we are going to discuss the laws of reflection on the basis of wave theory. We will prove the laws of reflection, that is angle of incidence is equal to angle of reflection, by using the Huygens principle or wave theory. Okay. So as we know that according to Huygens principle, every point on the given wavefront act as a fresh source for due disturbance known as secondary wavelet. So it acts as a source for secondary wavelet which travel in all directions with the velocity of light in the medium. Second thing is a surface touching these secondary wavelet tangentially in the forward direction at any instant give the new wavefront at that instant. So there are two laws of Huygens. Okay, we will use this law to prove this law of reflection on the basis of wave theory. So let AB is a plane wavefront. This AB is a plane wavefront incident on a plane mirror A, M1 and M2. This is a mirror M1 and this is a mirror M2. M1, M2 is a mirror. So this is a wavefront that is incident on a mirror M1, M2 at angle BA dash. This point is A dash. So at angle BA dash. Let 1, 2, 3 are the corresponding incident rays perpendicular to the AB. Okay. These are the perpendicular rays perpendicular to AB. इसके perpendicular आ रही हैं. So according to Huygens principle, every point on AB is a source of secondary wavelet from point B strike M1 M2 at A dash. इसको हम आगे तक लेके आएंगे. Then it will strike at A dash. Okay. In time t. Let us suppose that here the speed of light is c. Suppose करते हैं कि जो wave front आपके पास जो ray of light आ रही है, it is traveling with the speed of light that is c, and it takes a time t. Okay. So we have, as we know that here BA dash is a distance, so where we have BA dash is equal to c into t, means speed of light into time. This is the equation number 1. Now the secondary wavelet from A will travel the same distance c into t in the same direction. जितनी distance यहाँ से यहाँ तक cover की है, उतनी distance secondary wavelet यहाँ से reflect होकर जाएगा तो उतनी distance cover करेगा. So with A as center, okay, with A as center, draw an arc B dash whose radius is equal to c into t. जितनी distance आपके पास ये आई है, BA dash is equal to c into t. Open the compass to this distance. Okay. So with A as center, draw an arc from this point. So draw an arc from this point. So this is a tangent point of this point. So it becomes a secondary wavelet. तो ये reflected wavelet आएगा. This is a secondary wavelet. If we draw a normal to this point, अगर यहाँ पर normal draw करें, तो ये normal draw कर रहे हैं, तो इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा तो आपके पास ये जो एंगल बचेगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी, इसको मिला देते हैं हम. दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट. ये जो आपके पास यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, इट मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये 90 डिग्री बनाएगा. तो 90 डिग्री बनाएगा आपके पास. यहाँ पे आपके पास आएगा, ये भी 90 डिग्री बना रहा है. दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. ये आपके पास बचता है 90 माइनस आई. सो ये वाला आपके पास बचेगा आई, अगेन आई, बिकॉज इट ऑल्सो मेक इन एंगल ऑफ 90 डिग्री. इस तरह से बनेगा. मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आपके पास वेवलेट ये आ रहा है. दिस इज अ वेवलेट. दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द wavelet AB. Okay. So this is the angle of incidence. ये angle of incidence बन रहा है. This is 90 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री आपके पास आ रहा है, so ये जो आपके पास एंगल बचेगा, this is 90 माइनस आई. अब हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है. ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो उसको लिखेंगे 90 माइनस आई. This will be equal to I.
So this is the angle of incidence. Again there is the angle of reflection. तो यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट बनेगा, एक यहाँ से आएगा, एक ये आ रहा आपके पास, दिस इज सेकेंडरी वेवलेट. अगेन यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपके पास आएगा. ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ वी हैव ए बी डैश, दिस इज अगेन इक्वल टू C into T because this is distance is same as that of BA dash. From A dash draw a tangent, हमने ये कर लिया पहले, draw a tangent. अब टेंजेंट को हमने मिला देना, यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट बन जाएगा. नाउ इन ट्राइंगल A dash B and triangle A dash B dash, A dash B and A dash B dash. These are two triangles. So we have A dash is equal to A dash. A dash is equal to A dash A. This is a common side for both the triangles. Second thing is angle. This angle is equal to this angle. This is 90 degree. Angle B is equal to angle B dash, each 90 degree. Third thing is AB dash. ये डिस्टेंस आपने प्रूव की हुई है. ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश, ये आपके पास आएगी, प्रूव्ड है हमारे पास. दीज आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2. दीज आर इक्वल. सो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ए डैश बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश. Okay, so we have A dash B dash. Therefore, we can say that from these two triangles, angle I is equal to angle R. This angle I is equal to angle R. हमने ये angle निकाला था. This is equal to I. Okay, so angle I, this angle is equal to this angle from this triangle. ये आपके पास angle पूरा I आएगा. ये आपके पास ये angle आएगा पूरे का पूरा I, और this ये angle आपके पास आएगा R. So angle I is equal to angle R by CPCT. ठीक है, corresponding part of congruent triangle. So this is the law of reflection. Okay, so this is the law of reflection. Next question is prove the Snell's law of refraction on the basis of Huygens principle. Second topic, that is based on the principle of Huygens principle. There are two topics. First is the reflection of light on the basis of Huygens principle, and second topic is refraction of light on the basis of Huygens principle. So students, this topic will be discussed in the next lecture. I hope you all understand this topic. Thank you very much.